सप्तदशः पाठः शब्द रूप। शब्द रूप वाक्य में अविकारी तथा क्रिया शब्दों के अतिरिक्त आने वाले सार्थक शब्दों को शब्द रूप के अंतर्गत रखा जाता है। शब्द रूपों का प्रयोग करते समय निम्न बिंदुओं पर विचार किया जाना चाहिए। कारांत स्वर कौन सा है? लिंग के निर्धारण के आधार पर पद का लिंग कौन सा है? संस्कृत शब्द क्या है? स्मरण रहे, शब्द रूपों का प्रयोग कारक चिन्हों के आधार तथा अनुवाद के दूसरे नियमों की निर्धारित करने की श्रृंखला है। नीचे कुछ विभिन्न कारांत व लिंग के आधार पर रूप दिए गए हैं। आलोक का प्रयोग अभ्यास के लिए दिया जा रहा है। अकारांत पुंगलिंग। शब्द रूप रामः। विभक्ति एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। प्रथमा रामः, रामौ, रामाः। द्वितीया रामं, रामौ, रामान्। तृतीया रामेण, रामाभ्याम, रामैः। चतुर्थी रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्यः। पंचमी रामात्, रामाभ्याम, रामेभ्यः। षष्ठी रामस्य, रामयोः, रामाणाम्। सप्तमी रामे, रामयोः, रामेषु। संबोधन हे राम, हे रामौ, हे रामाः। आलोक ईश्वरः, ईश्वर्या स्वामी। बालकः मनुष्यः, ग्रामः गांव। नृपः राजा। विद्यालयः पुत्रः। जनकः प्राज्ञः विद्वान्। सज्जनः दुर्जनः। खलः शिष्यम्। शिष्यः सूर्यः चंद्रः। खगः पिकः करः आदि रूप राम की तरह चलेंगे। अकारांत नपुंसक लिंग। शब्द रूप कलमम। विभक्ति एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। प्रथमा कलमम, कलमे, कलमानि। द्वितीया कलमम, कलमे, कलमानि। तृतीया कलमेन, कलमाभ्याम, कलमैः। चतुर्थी कलमाय, कलमाभ्याम, कलमेभ्यः। पंचमी कलमात्, कलमाभ्याम, कलमेभ्यः। षष्ठी कलमस्य, कलमयोः, कलमानाम्। सप्तमी कलमे, कलमयोः, कलमेषु। आलोक फलम, पुस्तकम, पुष्पम, फूल। पत्रम, पत्र, पत्ता। भोजनम, जलम, राज्यम, सत्यम। गृहम, घर। वनम, जंगल। रत्नम, मणि। सुवर्णम, सोना। जलजम, कमल। कुसुमम, फूल। विषम, विष। नेत्रम, आंख। उद्यानम, नखम, नाखून आदि के रूप कलमम की तरह चलते हैं। आकारांत स्त्रीलिंग। शब्द रूप रमा, लक्ष्मी। विभक्ति एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। प्रथमा रमा, रमे, रमाः। द्वितीया रमाम, रमे, रमाः। तृतीया रमया, रमाभ्याम, रमाभिः। चतुर्थी रमायै, रमाभ्याम, रमाभ्यः। पंचमी रमायाः, रमाभ्याम, रमाभ्यः। षष्ठी रमायाः, रमयोः, रमाणाम्। सप्तमी रमायाम्, रमयोः, रमासु। संबोधन
हे रमे, हे रमे, हे रमाः। आलोक, कन्या लड़की, अजा बकरी, वसुधा सुधा, आर्या पत्नी, आज्ञा निशा रात्रि, जटा क्षमा, माला गंगा, यमुना शिला, प्रजा लज्जा, लता, पाठशाला, क्रीडा, कथा कहानी, व्यथा, बाला, प्रभा, कांता स्त्री, निष्ठा, श्रद्धा आदि के रूप रमा की तरह चलेंगे। इकारांत पुंगलिंग, शब्द रूप हरे। विभक्ति एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। प्रथमा हरिः हरि हरयः, द्वितीया हरिम हरि हरीन्, तृतीया हरिणा हरिभ्याम हरिभिः, चतुर्थी हरये हरिभ्याम हरिभ्यः, पंचमी हरेः हरिभ्याम हरिभ्यः, षष्ठी हरेः हर्योः हरिणाम्, सप्तमी हरौः हर्योः हरिषु। संबोधन हे हरे, हे हरौ, हे हरयः। आलोक, मुनिः कविः यतिः सन्यासी, रविः अग्निः गिरिः कपिः भूपतिः सेनापतिः, विधिः भाग्य कानून, निधिः अरिः शत्रु, नृपतिः उदधिः समुद्र, असिः तलवार, अतिथिः कपिः, पाणिः प्रजापतिः, रश्मिः किरण, व्याधिः रोग के रूप हरि की तरह चले। इकारांत नपुंसकलिंग, शब्द रूप वारे जल। विभक्ति एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। प्रथमा वारे वारिणी वारीणि, द्वितीया वारे वारीणि वारीणि, तृतीया वारिणा वारिभ्याम वारिभिः, चतुर्थी वारिणे वारिभ्याम वारिभ्यः, पंचमी वारिणः वारिभ्याम वारिभ्यः, षष्ठी वारिणः वारिणोः वारिणाम्, सप्तमी वारिणी वारिणोः वारीषु। संबोधन हे वारे, हे वारि, हे वारिणी, हे वारिणी। आलोक, अक्षि आंख, अस्थि हड्डी, सख्ति जांग, शुषे बिल आदि के रूप वारि की तरह चलेंगे। दधि के रूप वारि की तरह नहीं चलते हैं। धि के रूप वारि की तरह नहीं चलते हैं। इकारांत स्त्रीलिंग, शब्द रूप मति बुद्धि। विभक्ति है एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। प्रथमा मतिः मति मतयः, द्वितीया मतिम मति मतीः, तृतीया मत्या मतिभ्याम मतिभिः, चतुर्थी मत्यै मतये मतिभ्याम मतिभ्यः, पंचमी मत्याः मतेः मतिभ्याम मतिभ्यः, षष्ठी मत्याः मतेः मत्योः मतीनाम्, सप्तमी मत्याम् मतौ मत्योः मतिषु। संबोधन हे मते, हे मति, हे मतयः। आलोक, गतिः श्रुतिः वेद, स्मृतिः भूमिः, औषधिः पंक्तिः, धूलिः अंगुलिः, प्रीतिः
श्रेणिः शान्तिः प्रकृतिः शक्तिः समितिः सभा नियतिः भाग्य व्रतार्तिः लता आदि के रूप मतिः के समान चलेंगे। ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप नदी विभक्तिः एकवचनम द्विवचनम बहुवचनम। प्रथमा नदी नद्यौ नद्यः द्वितीया नदीं नद्यौ नदीः तृतीया नद्या नदीभ्यां नदीभिः चतुर्थी नद्यै नदीभ्यां नदीभ्यः पंचमी नद्याः नदीभ्यां नदीभ्यः षष्ठी नद्याः नद्योः नदीनां सप्तमी नद्यां नद्योः नदीषु। संबोधन हे नद हे नद्यौ हे नद्यः। आलोक कुमारी सखी रजनी प्राची कौमुदी मृगी नगरी वापी श्रीमती गौरी नारी पुत्री गृहिणी प्रतीची मही सिंही दासी आदि के रूप नदी की तरह चलेंगे। ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप स्त्री विभक्तिः एकवचनम द्विवचनम बहुवचनम। प्रथमा स्त्री स्त्रियौ स्त्रियः द्वितीया स्त्रियं स्त्रीं स्त्रियौ स्त्रीः स्त्रियः तृतीया स्त्रीत् स्त्रिया स्त्रीभ्यां स्त्रीभिः चतुर्थी स्त्रियै स्त्रीभ्यां स्त्रीभ्यः पंचमी स्त्रियाः स्त्रीभ्यां स्त्रीभ्यः षष्ठी स्त्रियाः स्त्रियः स्त्रियोः स्त्रीणां सप्तमी स्त्रियां स्त्रियोः स्त्रीषु स्त्रीषु। संबोधन हे स्त्री हे स्त्रियो हे स्त्रियः। आलोक स्त्री शब्द तथा नदी शब्द में अंतर यह है कि नदी शब्द में स्वशदी विभक्ति आने पर ई के स्थान में य हो जाता है, जैसे नद्यौ नद्यः, और स्त्री शब्द में ई के स्थान में इय होता है, जैसे स्त्रियौ स्त्रियः। उकारांत पुंगलिंग शब्द रूप गुरु अध्यापक विभक्तिः एकवचनम द्विवचनम बहुवचनम। प्रथमा गुरुः गुरु गुरुवः द्वितीया गुरुं गुरु गुरुन् तृतीया गुरुणा गुरुभ्यां गुरुभिः चतुर्थी गुरवे गुरुभ्यां गुरुभ्यः पंचमी गुरोः गुरुभ्यां गुरुभ्यः षष्ठी गुरोः गुर्वोः गुरुणां सप्तमी गुरौ हे गुर्वोः हे गुरुषु। संबोधन हे गुरौ हे गुर्वोः हे गुरुवः। आलोक इषुः बाण शत्रुः प्रभुः बिंदुः बूंद भानुः कृशानुः आग विदुः चंद्रमा शंभुः शिशुः मृत्युः मृदुः साधुः पाशुः वायुः पशुः तरुः परशुः बाहुः वायुः आदि के रूप गुरु की तरह चलेंगे। उकारांत नपुंसक लिंग शब्द रूप मधु शहद विभक्तिः एकवचनम द्विवचनम बहुवचनम। प्रथमा मधु मधुनी मधुने तृतीया मधु मधुनी मधुने तृतीया मधुना मधुभ्यां मधुभिः चतुर्थी मधुने
मधुभ्याम् मधुभ्यः पंचमी मधुनः मधुभ्याम् मधुभ्यः षष्ठी मधुनः मधुनोः मधुनाम् सप्तमी मधुने मधुनोः मधुषु संबोधन हे मधु हे मधो हे मधुनी हे मधुने आलोक वसु धन सानु पर्वत की चोटी जतु लाख अश्रु तालु वस्तु जानु दारु लकड़ी अंबु श्मश्रु आदि के रूप मधु की तरह चलेंगे। उकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप धेनु गाय विभक्ति एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम प्रथमा धेनुः धेनु धेनवः द्वितीया धेनुम् धेनु धेनुः तृतीया धेन्वा धेनुभ्याम् धेनुभिः चतुर्थी धेनवे धेन्वै धेनुभ्याम् धेनुभ्यः पंचमी धेन्वा धेनोः धेनुभ्याम् धेनुभ्यः षष्ठी धेन्वाः धेनोः धेन्वोः धेनुनाम् सप्तमी धेनौ धेन्वाम् धेन्वोः धेनुषु संबोधन हे धेनो हे धेनु हे धेनवः ऋकारांत पुल्लिंग शब्द रूप पितृ पिता विभक्ति एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम प्रथमा पिता पितरौ पितरः द्वितीया पितरम पितरौ पितृन् तृतीया पित्रा पितृभ्याम् पितृभिः चतुर्थी पित्रे पितृभ्याम् पितृभ्यः पंचमी पितुः पितृभ्याम् पितृभ्यः षष्ठी पितुः पित्रोः पितॄणाम् सप्तमी पितरि पित्रोः पितृषु संबोधन हे पितः हे पितरौ हे पितरः आलोक कर्तृ करने वाला हर्तृ हरने वाला धर्तृ धर्ता श्रोत्री सुनने वाला वक्त्री वक्ता गंत्री जाने वाला द्रष्ट देखने वाला ऑप्शन द्रष्टृ देखने वाला नेत्री नेता दात्री दाता भोक्त्री खाने वाला भ्रातृ भाई जागात्री दामाद आदि के रूप पितृ की तरह चलेंगे। सर्वनाम शब्द रूप युष्मद् तुम तू प्रयोग स्त्रीलिंग तथा पुंगलिंग विभक्ति एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम प्रथमा त्वम युवाम यूयम द्वितीया त्वाम त्वा युवाम वाम युष्मान वह तृतीया त्वया युवाभ्याम युष्माभिः चतुर्थी तुभ्यं ते युवाभ्याम वाम युष्मभ्यं वह पंचमी त्वत् युवाभ्याम युष्मत् षष्ठी तव ते युवयोः वाम युष्माकं वह सप्तमी त्वयि युवयोः युष्मासु सर्वनाम अस्मद् मैं प्रयोग स्त्रीलिंग तथा पुंगलिंग विभक्ति एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम प्रथमा अहम आवाम वयम द्वितीया माम मा आवाम नो अस्मान् नः तृतीया मया आवाभ्याम अस्माभिः चतुर्थी मह्यं मे आवाभ्याम
नौ, अस्मभ्यं नः। पंचमी, मत्, आवाभ्याम्, अस्मत्। षष्ठी, मम, मे, आवयोः नौ, अस्माकं, नः। सप्तमी, मयि, आवयोः अस्मासु। सर्वनाम, सर्व, सब, पुंलिंग शब्द। विभक्ति, एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। प्रथमा, सर्वः, सर्वौ, सर्वाः। द्वितीया, सर्वं, सर्वौ, सर्वान्। तृतीया, सर्वेण, सर्वाभ्याम्, सर्वैः। चतुर्थी, सर्वस्मै, सर्वाभ्याम्, सर्वेभ्यः। पंचमी, सर्वस्मात्, सर्वाभ्याम्, सर्वेभ्यः। षष्ठी, सर्वस्य, सर्वयोः, सर्वेषाम्। सप्तमी, सर्वस्मिन्, सर्वयोः, सर्वेषु। संबोधन, हे सर्व, हे सर्वौ, हे सर्वे। नपुंसकलिंग शब्द। विभक्ति, एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। प्रथमा, सर्वं, सर्वे, सर्वाणि। द्वितीया, सर्वं, सर्वे, सर्वाणि। तृतीया, सर्वेण, सर्वाभ्याम्, सर्वैः। चतुर्थी, सर्वस्मै, सर्वाभ्याम्, सर्वेभ्यः। पंचमी, सर्वस्मात्, सर्वाभ्याम्, सर्वेभ्यः। षष्ठी, सर्वस्य, सर्वयोः, सर्वेषाम्। सप्तमी, सर्वस्मिन्, सर्वयोः, सर्वेषु। संबोधन, हे सर्वं, हे सर्वे, हे सर्वाणि। स्त्रीलिंग शब्द। विभक्ति, एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। प्रथमा, सर्वा, सर्वे, सर्वाः। द्वितीया, सर्वां, सर्वे, सर्वाः। तृतीया, सर्वया, सर्वाभ्याम्, सर्वाभिः। चतुर्थी, सर्वस्यै, सर्वाभ्याम्, सर्वाभ्यः। पंचमी, सर्वस्याः, सर्वाभ्याम्, सर्वाभ्यः। षष्ठी, सर्वस्याः, सर्वयोः, सर्वासाम्। सप्तमी, सर्वस्याम्, सर्वयोः, सर्वासु। संबोधन, हे सर्व, हे सर्वे, हे सर्वाः। सर्वनाम, इदं, यह, पुल्लिंग। विभक्ति, एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। प्रथमा, अयम्, इमौ, इमे। द्वितीया, इमम्, एनम्, इमौ, एनौ, इमान्, एनान्। तृतीया, अनेन, एनेन, आभ्याम्, एभिः। चतुर्थी, अस्मै, आभ्याम्, एभ्यः। पंचमी, अस्मात्, आभ्याम्, एभ्यः। षष्ठी, अस्य, अनयोः, एनयोः, एषाम्। सप्तमी, अस्मिन्, अनयोः, एनयोः, एषु। इदं, नपुंसकलिंग। विभक्ति, एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। प्रथमा, इदम्, इमे, इमानि। द्वितीया, इदम्, इनित्, इमे, इने, इमानि, इनानि। तृतीया, अनेन, इनेन, आभ्याम्, एभिः। चतुर्थी, अस्मै, आभ्याम्, एभ्यः। पंचमी, अस्मात्, आभ्याम्, एभ्यः। षष्ठी, अस्य, अनयोः, एनयोः, एषाम्। सप्तमी, अस्मिन्, अनयोः, एनयोः, एषु। इदं, स्त्रीलिंग। विभक्ति, एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। प्रथमा, इयम्, इमे, इमाः। द्वितीया, इमाम्, इमे, इमाः। तृतीया, अनया, आभ्याम्, आभिः। चतुर्थी, अस्यै,
आभ्याम् आभ्यः। पंचमी अस्याः आभ्याम् आभ्यः। षष्ठी अस्याः अनयोः आसाम्। सप्तमी अस्याम् अनयोः आसु। सर्वनाम यत् जो। पुंलिंग। विभक्तिः एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्। प्रथमा यः यौ ये। द्वितीया यम् यौ यान्। तृतीया येन याभ्याम् यैः। चतुर्थी यस्मै याभ्याम् येभ्यः। पंचमी यस्मात् याभ्याम् येभ्यः। षष्ठी यस्य ययोः येषाम्। सप्तमी यस्मिन् ययोः येषु। यत् नपुंसकलिंग। विभक्तिः एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्। प्रथमा यत् ये यानि। द्वितीया यत् ये यानि। तृतीया येन याभ्याम् यैः। चतुर्थी यस्मै याभ्याम् येभ्यः। पंचमी यस्मात् याभ्याम् येभ्यः। षष्ठी यस्य ययोः येषाम्। सप्तमी यस्मिन् ययोः येषु। यत् स्त्रीलिंग। विभक्तिः एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्। प्रथमा या ये याः। द्वितीया याम् ये याः। तृतीया यया याभ्याम् याभिः। चतुर्थी यस्यै याभ्याम् याभ्यः। पंचमी यस्याः याभ्याम् याभ्यः। षष्ठी यस्याः ययोः यासाम्। सप्तमी यस्याम् ययोः यासु। सर्वनाम एतद् यः पुंलिंग। विभक्तिः एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्। प्रथमा एषः एतौ एतेः। द्वितीया एतम् एतौ एतान्। तृतीया एतेन एताभ्याम् एतै एतैः। चतुर्थी एतस्मै एताभ्याम् एतेभ्यः। पंचमी एतस्मात् एताभ्याम् एतेभ्यः। षष्ठी एतस्य एतयोः एतेषाम्। सप्तमी एतस्मिन् एतयोः एतेषु। सर्वनाम तद् वः पुंलिंग। विभक्तिः एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्। प्रथमा सः तौ ते। द्वितीया तम् तौ तान्। तृतीया तेन ताभ्याम् तैः। चतुर्थी तस्मै ताभ्याम् तेभ्यः। पंचमी तस्मात् ताभ्याम् तेभ्यः। षष्ठी तस्य तयोः तेषाम्। सप्तमी तस्मिन् तयोः तेषु। तद् नपुंसकलिंग। विभक्तिः एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्। प्रथमा तत् ते तानि। द्वितीया तत् ते तानि। तृतीया तेन ताभ्याम् तैः। चतुर्थी तस्मै ताभ्याम् तेभ्यः। पंचमी तस्मात् ताभ्याम् तेभ्यः। षष्ठी तस्य तयोः तेषाम्। सप्तमी तस्मिन् तयोः तेषु। तद् स्त्रीलिंग। विभक्तिः एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्। प्रथमा सा ते ताः। द्वितीया ताम् ते ताः। तृतीया तया ताभ्याम् ताभिः। चतुर्थी तस्यै
ताभ्यां ताभ्यः। पंचमी, तस्याः ताभ्यां ताभ्यः। षष्ठी, तस्याः तयोः तासां। सप्तमी, तस्यां तयोः तासु।